Chairman, Indian Art History Congress, Professor Dr. D.S. Somsekhar, General Secretary, Indian Art History Congress, and Professor Emeritus, Professor Dr. Anupa Pandey, ma'am, to kindly, and DG NGMA, please to kindly come up on the stage. As we commence the valedictory program, I would like to call everyone to in order to light up the lamp ceremony. I request Ms. Gitanjali to assist. Thank you, sir. Thank you, ma'am. May I request Professor Emeritus, Professor Dr. Anupa Pandey, to welcome and honor our chief guest, Professor Sachidanand Joshi, with a bouquet and a stole. Sachidanand Joshi, Member Secretary, the Executive and Academic Head of Indira Gandhi National Center for Arts, New Delhi, is a scholar of history and mass communication, a writer, a poet, and an actor. He was the founder, Vice Chancellor of the Kushabhai Thakre University of Journalism and Mass Communication, Raipur. He served as Vice Chancellor for 2 terms. He was also the founder registrar of Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication, Bhopal. He served as Dean in the Makhanlal Chaturvedi National University of the Journalism and Communication, Bhopal too. He has written extensively on media, communication, history, culture, education, policy, and other relevant issues. He has been delivering lectures on communication, gender sensations, research for resurgence, personality development, art, and culture in prestigious institutions. He has edited the speech of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi for Publication Division. He edited many other prestigious publications. He has been writing extensively. Some of his recent publications works include Sachidanandan Joshi ki Lokpriya Kahaniyan 2017, Kuch Alpha Viram 2018, Pal Bhar Ki Pehchan 2019, 2 poetry collections. His speeches have been compiled into, just the last line, sir, has been compiled in 2 volumes titled Mera Desh Mera Dham. Now I kindly request Professor Dr. D.S. Somsekhar, General Secretary, ICHR, to welcome and honor our chief guest, Professor Sachidanand Joshi ji, on behalf of the Indian Art History Congress.
request Dr. Savita Kumari, convener of the 32nd session of India Art History Congress, to kindly share a brief report on Congress. Good evening. Esteemed dignitaries on the dais, honorable scholars from across the country, faculty members, students, and staff of the Indian Institute of Heritage. It gives me immense pleasure and honor to report the three days deliberations on this Congress titled Rendering of Indian Epics in Art and Culture. As all of us can see that the theme has drawn immense interest and engagement from scholars across the country. The overwhelming response reflected in the volume and variety of papers presented. The participation of large number of scholars underscores not only the enduring legacy of the epics, but also highlights the contemporary relevance of this theme in visual and cultural context of India and Asia. A total of 129 papers were presented in 38 sessions. Scholars reflected on a diversity of perspectives encompassing thematic discourses that delve into complex interplay of mythology, history, aesthetics, statehood, identity, cultural exchanges, diplomacy, international legacies, modernist reinterpretations, and regional influences, among others. Eminent chairpersons from across the institutions and regions meticulously navigated the sessions, which immensely helped in thought-provoking discussions and time management. Furthermore, the diverse backgrounds of the scholars from disciplines such as art history, archaeology, ancient Indian history, epigraphy, numismatics, and others, and their varied research interests have brought about unique intersections of thought and interdisciplinary dialogues, fostering new and enriched outlook on the epics. The 3 days conference was further enriched by erudite lectures of Professor Sushmita Pandey, Dr. T. Satyamurthy, and Dr. Sabyasachi Mukherjee. I hope the conference experience was further enhanced by the cultural program on Dhrupad, Khayal, Thumri, and Bhajan by eminent Dhrupad artist Pandit Uday Malik and his team. Under the guidance of our Vice Chancellor, Professor B.R. Mani, and Chairman of Indian Art History Congress, Professor Maruti Nandan Tiwari, I hope we managed to provide a conducive and collaborative environment for engaging discussion over the course of past 3 days. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I would like to call upon... Okay. So now, India Art History Congress would like to felicitate Dr. Savita Kumari, the convener of the 32nd session of India Art History Congress. I would now like to request Professor Dr. D.S. Somsekhar, General Secretary, ICHR, to kindly share his views. Our 3-day conference is coming to an end with this valedictory function. For the success of
such a great conference. There have been great efforts about which I will speak later. In this valedictory function, the Vice Chancellor of the Indian Institute of Heritage, Professor Dr. B.R. Maniji, is present. I request him to chair this function and I welcome him on behalf of Indian Art History Congress and on behalf of the Indian Institute of Heritage. Sir, you are welcome, sir. It's really our great fortune to have Professor Sachidananda Joshi ji, Member Secretary, IGNCA, New Delhi. Such a great scholar of his eminence will address us shortly, and it will be our great fortune to listen to him. Sir, I welcome you on behalf of Indian Art History Congress and Indian Institute of Heritage, sir. You are welcome. With us on the dais is Dr. Sanjeev Kumar Gautamji, DG, National Gallery of Art. We are so happy to have him with us. Sir, you are wholeheartedly welcome to this function. Our Chairman of Indian Art History Congress, Dr. Professor Martinandan Prasad Tiwari ji, is with us, our guiding force. I welcome him to this function on behalf of everybody. Dr. Professor Anupa Pandey ji is with us. He has been doing so many things very actively for the success of this conference. Madam, I welcome you to this valedictory function on behalf of Indian Art History Congress and Indian Institute of Heritage. I welcome Dr. P.K. Sharma ji, all the faculty members of this institute, researchers, students, volunteers, all the delegates, members of the press and electronic media. I also welcome Dr. Sushmita Pandey ji, our General President. I welcome Dr. Satyamurthy ji, who delivered Professor K.D. Bajpai Memorial Lecture. I also welcome Dr. Sabyasachi Mukherjee ji, who delivered Dr. R.D. Chaudhary Memorial Lecture. I welcome one and all to this valedictory address. Also, we are so happy that we have with us Shri Rajiv Kumar ji, who has instituted 4 awards with Indian Art History Congress. I welcome him to this function, and I welcome one and all to this function. Our Indian Art History Congress has been doing a yeoman service to the cause of art for the past 32 years. We have been conducting annual conferences in many places, cultural centers, universities and all. The founding fathers of this great organization had a dream that this organization should continue to effectively serve the cause of art and promote the interest in the young minds to preserve and protect
the great heritage of India in the form of culture and art. And we are committed to this great cause. We are happy that in the last few years, very young scholars, but very, very enthusiastic, who are capable of presenting very qualitative papers are with us. They are our hope. Today, in one of these sessions, while addressing our Dr. Satyamurthy ji said one thing. In the beginning, it was only the elderly scholars who were into such academic activities. It came to the second generation, and now such activities have been brought down to the third generation by the present senior scholars. This credit must go to our chairman, Professor M.N.P. Tiwari ji, Dr. Chudamani Nandagopal, Dr. Nandita Krishna, and many others. The list is a very big one. Therefore, it takes a lot of time. I'm not mentioning all those great names, but they are all responsible for taking this great institution to greater heights. In the years to come, we intend to conduct different types of academic activities which are helpful especially for the students and the researchers. As I said, they are the ones who will carry the baton of this great organization. An institution must have an insight, it must have foresight, then only it can achieve much. That's what we are trying to do with the help of many and as a teamwork. Taking into consideration the type of work being done by Indian Art History Congress, a great lover of art like Sri Rajiv Kumar came forward to institute 4 awards with us in the loving memory of his wife. One is for the senior scholars above 60 years of age, and another 3 awards are for the upcoming young scholars who present qualitative papers. And with these awards being given to young scholars, year after year, we are witnessing greater improvement in the quality of the papers being presented by young scholars. And in the years to come, we expect more and more such qualitative papers. Friends, this conference is a very great success. Really, this the third day. We just don't know how all these 3 days have gone. The organizers of this conference have been very, very professional and very, very academic. I don't remember to have seen wasting even 1 minute. Professor B.R. Maniji was our General President. In our Chennai conference, the Chennai team headed by Dr. Nandita Krishna, Mohan, Balaji and others, after 2 years of Corona, they conducted the conference in Chennai in such a wonderful manner. At that time, Professor B.R. Maniji was our General President, and his affinity with us continued. Last year, he was our guest of honor in the Amarkantak conference. Our Professor Shrotriji is here. It's also a very memorable conference that they conducted at Amarkantak. It was at that time, on our request, Dr. B.R. Maniji wholeheartedly came forward to host this
conference, and therefore all of us are here, and this conference is a great success under his guidance and a great supervision. When our intentions are honest, we are sure to reap very good fruits. That's what we understand. It is not easy to conduct a conference of this magnitude. How much devotion it requires, how much efforts it requires. We all understand their efforts behind the success of this great conference, and there are people still to speak about this conference. Right now, I speak only this much, and next year we are conducting the 33rd session of Indian Art History Congress at the Mythic Society, Bengaluru, in the month of February 2026. I request all of you to come to Bangalore and attend the 33rd session. Thank you, one and all. Thank you, sir. Now, for observations of the participants, I would like to call upon, one by one, Professor Dr. Srinivas B. Padigar. Honorable guest of the day and the dignitaries on the dais and my fellow delegates. It's indeed a privilege for me to be before you to share my experiences of these 3 days of the great 32nd session of the Indian Art History Conference Congress. The Secretary of the Indian Art History Congress has already mentioned before you about the success in terms of academics. But I should share a few other things on this occasion. Actually, myself and my friend came along with our families to this conference, and we reached on the 7th of this month at 9:30 in night. And I was surprised to see a group of volunteers with smiling face welcoming us at that moment. And actually, we had not registered for accommodation here. We had thought of some other accommodation to be made. But at the last moment, we had to change that. So we contacted Savita and Dr. Mani also. And they said some arrangement will be made. You first arrive at the campus. And that is what they did. So at that late night, we were given, you see, very warm welcome, taken to dinner, and accommodation was provided at the last moment, despite the fact that there are a lot of inconveniences because of our delayed information. This kind of treatment I saw for all the 3 days. There was one or the other volunteer placed before us to take care of us, to take to the guest house where the breakfast, lunch and dinner are served, and wonderful food was served to us. I'm really surprised at the way in this metropolis
it may be easier to conduct a seminar like this in a smaller place, despite some inconveniences. But to conduct it in metropolis, it is even more difficult. But I and my fellow delegates felt that all the arrangements that were made apart from the academic provisions for academic discussions were indeed really great, and we have enjoyed our time in Delhi for all these 3 days. And I am sure there are large number of faces behind the screen who have put in efforts to make this success. Maybe we have not met them all, and I take this opportunity to thank all of them, including the organizers in general, the Institute of Indian Heritage, its Vice Chancellor, Professor Mani, and others associated with the Institute. I thank them all on behalf of all of us here. And I have nothing to say more than that. Next year, 2026 February, we will meet in Bangalore. The conference will be organized by the Mythic Society at Bangalore, where I am presently holding the position of Director for Academics and Research. I welcome you all in advance for that occasion to see you all. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to call upon Professor Usha Rani Tiwari. सबसे पहले तो मैं सम्मानित मंच को नमस्कार करती हूँ और आप सभी को भी नमस्कार। मुझसे इस 3 दिनों की सफल सेमिनार के बारे में अपने भावों को व्यक्त करने की कहा गया है, तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि इस शानदार आयोजन की सफलता और मेज़बानी के लिए मैं डॉक्टर सविता और उनकी टीम को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि उनके साथ ही जो सिलसिला शुरू हुआ, फ़ोन से ही शुरू हुआ कि कब आना है, कैसे आना है, मैडम कब आपकी आइटिनरी है, कब आप पहुँच रहे हो। और जैसा कि अभी प्रोफेसर पडिक्कर सर ने कहा, एकोमोडेशन, हर मिनट आके सुबह पूछना कि मैडम गर्म पानी मिला, आपने नाश्ता किया। तो इस तरह से एक एक छोटी छोटी सी चीज़ों को, हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों का उन्होंने बहुत मन से, भाव से जो ख्याल रखा है, मैं उनकी हृदय से आभारी हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो सुस्वादु भोजन के लिए, क्योंकि सबके बाद भूख तो लगती है, और मैं ख़ास तौर से प्रोफेसर अनुपा पांडे मैम का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने बहुत सोच करके मेनू बनाया, और मेरी उनसे बात हो रही थी कि खाना तो बहुत अच्छा बना है, तो उन्होंने बताया कि उनका पूरा इंस्ट्रक्शन था कि भाई कम तेल होना चाहिए, कम मसाले होना चाहिए। तो जो आपने हम लोग के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा है स्वाद के साथ साथ, तो मैडम मैं आपको भी बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और मैंने तो बहुत कुछ सीखा। अगर मैं कहूँ कि जो हमें किट मिली हुई है, बैग बड़ा यूज़फुल है, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी किताबें और चीज़ें मिल गई हैं, तो आराम से मैं उनको ले करके कैरी करके ले जा सकती हूँ। पब्लिकेशन इज़ वेरी वेरी सुपर, हाई क्वालिटी पब्लिकेशंस हैं। और सबसे बड़ी बात है प्रोग्राम्स। जैसा भी बताया कि सविता जी ने कि 129 पेपर्स पढ़े गए हैं, और तो उनको 4 पैरेलल सेशन में कैसे उन्होंने कैटेगराइज किया है, मैंने देखा कि थीम वाइज उसमें कितनी मेहनत लगी होगी। दैट वाज ए मैराथन एक्सरसाइज। मतलब बुद्धिस्ट अलग किया उन्होंने, मॉडर्न आर्ट अलग किया, तो दैट वाज रियली सविता जी, मैं आपको फिर से मैं बार बार मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ। और
और जो सब मैंने कहा, खाने की बात हो गई, किट की बात हो गई, और एकेडमिक सेशंस में हमने बहुत कुछ सीखा और काफ़ी कुछ मतलब प्रोग्राम से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता कि क्योंकि हम जब सेमिनार में पहुँचते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारा पेपर कब है, तो हमें इधर उधर घूमना पड़ता है और ऑर्गेनाइजर्स को पूछना पड़ता है। लेकिन उन्होंने वेल प्लान, वेल कंसीव्ड, वेल ऑर्गेनाइज, मैं इतना ही कहूँगी, जिससे कि हमें कोई हैसल फ्री हम लोगों ने इन्जॉय किया। तो बस बाकी मैं सारे पार्टिसिपेंट्स की ओर से यही कहूँगी कि इस तरह के आयोजन आप बार बार कीजिए और हम लोग को बुलाइए। और मैं खुद को बहुत अपने को भाग्यवान मान रही हूँ और मैं खुद को धन्यवाद दे रही हूँ कि मैं इतने शानदार आयोजन में, इतने सफल आयोजन की मैं एक प्रत्यक्षदर्शी बनी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं हमारे वीसी साहब जो हमारे बीएचयू परिवार से ही हैं, निश्चित रूप से वही इस पूरी सफलता के पीछे गाइडिंग फोर्स का काम उन्होंने किया है, तो मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और मैं जानती हूँ, क्योंकि हम भी सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, विद्यार्थियों के बिना तो हम चल ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि आईएच के विद्यार्थी जो हैं, इन लोगों ने बड़ी तत्परता के साथ, बड़े समर्पण के साथ हर कदम पे हमारी जो है मदद की। चाहे वो हमें वेन्यू ढूंढने की बात थी या किसी भी ढंग की प्रॉब्लम थी, उनको जब मैंने शेयर किया कि बेटा ये इमीडिएटली, और जैसा कि अभी पेडकर साहब ने कहा, विदाउट एनी टेंस और मुस्कान के साथ। तो मैं एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for your encouraging words. Now I would like to request Professor Sudipari Bondopadhyay to come and share her views. Respected dignitaries and other in the audience, colleagues, friends, students, everybody. This is the first time I came to the Indian Institute of Heritage, but here they welcomed us very cordially, and really they have appeared in every corner. We are really enjoyed regarding the academic session, regarding the food, whatever Sharani Tiwari ji बोला, ये तो एक ही बात है, और सब कुछ के लिए also academic production भी आपको बहुत अच्छा है, और selection of papers and everything. And I am really astonished to see here that there is a committee of selection of abstracts. It is really important. Thanks for the convener and other Professor Pandey. This is very important for the upgradation of the academic pursuit, and for the Indian Art History Congress it is also benefited. In future also we are also interested to collaborate in this institution. This is from my end and all from the Indian Art History Congress. Thank you once again. Thank you, ma'am. I now request Dr. UC Dwivedi to come and share some views. मध्यस्थ सभी आदरणीय सभागार में बैठे मित्रों, हम इस नोएडा सेशन का इंतजार कर रहे थे कि कब प्रारंभ होगा, और अब हम समाप्ति की ओर। समय कितना जल्दी बीत गया पता नहीं चला। आयोजकों ने इतने अच्छे ढंग से इसकी व्यवस्था की थी कि कहना, उन्हें धन्यवाद देना सबसे जरूरी होगा। मैं निश्चित रूप से आयोजन समिति की सचिव
सविता जी को धन्यवाद दूंगा विशेष रूप से। मैंने पूरे सेशन में इनको लगभग दौड़ते देखा है, 1 मिनट भी बैठते नहीं देखा। और मैं समझता हूँ कि कलकत्ता सेशन के बाद, कलकत्ता में 1912 में 2012 में हम लोग का सेशन हुआ था, उसकी आयोजन समिति की सचिव एक महिला थी, और फिर 2025 में आयोजन समिति की एक सचिव महिला हैं। इस महिला शक्ति को विशेष रूप से हम उनका अभिवादन करते हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी प्रतिभागी को इस आयोजन में कोई कष्ट नहीं हुआ है, और जो अतिथि सत्कार के इन्होंने नमूना पेश किया है वह अद्भुत है। मैं अधिकांश बातें लोग कह चुके हैं, इसलिए बहुत कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि डॉक्टर B.R. मनी अनुपा जी के नेतृत्व में और भी आगे इस ढंग के कार्यक्रम होंगे यहाँ, और हम लोगों को फिर उसमें आने का अवसर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ उनके इस अद्भुत आयोजन के लिए, जिसमें कोई कमी नहीं रही हो, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं आप सबों की तरफ से और अपनी तरफ से। भारतीय इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस की तरफ से धन्यवाद। Thank you, sir. Now I request Dr. V. Mohan to come and share a few words. नमस्सभायै सभापतिभ्यश्च। खाना पीना रखना, everyone already told about everything. Just to my observations, there is a small saying. I think if I say a little bit slow, you can understand. Ananta sastram bahu veditavyam alpascha kalaha bahavascha vignaha yat sarabhutam tadupasitavyam hamso yata kshiramivambu visram. Ananta Sastram, lot of to learn. Bahu Veditavyam, we have to learn a lot, especially for students here, I am telling. Alpascha kalaha, life is too short. And Bahavascha vignaha, hurdles and obstacles, it will always barricades. But yet sarabhutam tadupasitavyam, whatever is the gist, very important, you have to take it. And it gives an example. Hamso yata kshiramivambu mistam, like milk from water as the swan, annam, hamsam, sweet takes. So now only milk is here, no Ananta Sastram. So everything you can see, you have enjoyed everything. And with this, for the youngsters here again, for Atityam, hospitality, everything spoke about it. Everyone spoke about it. And there is a beautiful sloka by Kalidasa in Raghuvamsa. Tam atitya kriyasanta ratakshobha parishramam papracha kusalam rajye rajyashrama munim munihi. Atiti satkaram, it is again from their Vedic roots. Matrudevo bhava, Pitrudevo bhava, Acharya devo bhava, Atiti devo bhava. You have seen the culmination of everyone. Matrudevo bhava, our Hindu, our custom says, except your wife, all are Matustan. We have seen a lot of impact. That is what Bhagavan Ramakrishna taught us. Pitrudev Bhava, all the elders are here. Acharya Deva Bhava and Atiti Deva Bhava. Atiti also, because he is considered as Narayana. So the sloka system, Atitya Kriya Santa. As Srinivas Padikarji mentioned, by 9:30 he reached. In fact, it happens to every venue. We go there, no one is asking anything. First, have you eaten anything? First, your dinner is ready because we travel along. So
First thing is Atitya Kriya, hospitality. Then inquiring about your everything. So what to see here, I just make whether it is communication or reception or accommodation, food, venue, organizing, sessions and coordination, everything what not to miss, everything in tandem. Sutre Manigana Iva, like Bhagavad Gita says, everything has been a threadbare made. In fact, it is, they are not hosting, in fact. Professor Manisarji, already he came to Amarkantak, they invited us. So we have been along with him in there. He is being with us all the 3 days in every session, everywhere, wherever you see. Manisa, Anupa Pandey madam, in fact, the local secretary. And one very important observation I have to make from all other things. First thing, the recognition is very important. That especially volunteers, for student volunteers, I should say, the very first time in your journal, you can see the names of the volunteers have been imprinted there. It is a very great recognition for your services, in fact. Because we strangers, we may not know your names. And at the same time, a few observations about the students here only I would like to make a center point here. So they have trained, because of their experience and expertise, elders, they trained the volunteer students in such a way that all the volunteers, what we have experienced, if asked for anything or any requirement, they never said in negative or no. They will find out something or somewhere they have make like a chain and they made everything possible. That is very important one. And another important, they are very ready to learn. And another very important thing, all the students, irrespective of, because nowadays, as we are in the academic field, we know when we go to university or somewhere else, how we deal with the students or how the students deal with us. But here in this campus, every student, each and every, not to leave anyone, whenever they see some elders, they do not know about us, but they immediately stand for a minute, they greet and they get our greetings. They are ready to, as our senior most Professor Jamketkar used to say, they are ready to interact with us. They want to learn a lot of things. It's a very great welcoming trend from you, in fact, in SES, and came forward to interact with them, showing interest to learn a lot. In fact, as an office bearer of the IAS also, I extend the young scholars to continue these activities of your learning process in all the, whether it may be article, submission of articles to Kala, participation in the coming sessions, for all the coming sessions. It will be very good for you also, for learning. And of course, our chairman and the general secretary, all of the seniors, they used to make this, insist upon this point everywhere. And everyone, we should give a big hand and kudos to all the organized team under the guidance of our VCG and Anupa Pandey madam, and to the local secretary, what to say, ever dynamic, energetic and ever smiling, our local secretary Savita Kumari ji. Give them a, see, because they need not tell everyone to go here or there, everything. So the students, the volunteers, they knew what is required, immediately they executed. And with these few words, I think everything has been taken care of. We'll meet in Bangalore again. Thank you. Thank you, one and all. Thank you, sir. Now I request Dr. Sanjeev Kumar Singh to share his views. तृतीय स्तंभ कुलपति डॉक्टर बुद्ध रश्मि मणि जी, सम्मानित मंच और प्रसाल में बैठे हुए सरस्वती के वरद पुत्रों और पुत्रियों, ऐसे आयोजन पर जब हम मिलते हैं तो दो तरह की आकांक्षा होती है, उत्कंठा होती है और एक
दिल में एक कसक सी रहती है कि क्या होने वाला है। और दो भाव होते हैं। आयोजक ये समझते हैं कि मुझे प्रशंसा मिले, हमारे में त्रुटियां नहीं हों, और जो आगंतुक होते हैं जिसे हम अतिथि कहते हैं, उनको यह होता है कि हमें सम्मान और साहचर्य मिले, जिसमें समरसता हो, अपनत्व का बोध हो। और ये दोनों चीज़ का समन्वय यहाँ बहुत सुंदर हुआ है। तथापि कुछ बातें होती हैं जिसके विषय में मैं अयोध्या में था तो एक कहानी सुन रहा था अभी। तो माता जगत जननी माँ सीता अयोध्या से लंका विजय के बाद लौटती हैं और सुग्रीव के आग्रह से किष्किंधा जाती। और जब किष्किंधा पहुँचती हैं तो सारी वहाँ की बंदरनियाँ आती हैं देखने के लिए और कहती हैं ये कौन है? यही अप्रतिम सुंदरी हैं, यही जगत माता है, यही जगत जननी है जिसके लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ। देखने में कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, कितनी प्यारी है। जितने विशेषण होते थे सारे कहे, लेकिन उसमें जो सबसे बूढ़ी औरत थी उसने कहा कि अगर ये पूंछ हो जाता तो और भी सुंदर लगता। इसी तरह से हम लोग बिहार के हैं, मैं बिहार से हूँ। पूर्वांचल में एक कहावत है कि भोज होता है तो लड्डू देता है। और कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे जो भोज में आके कहते हैं कि सब कुछ ठीक रहे लेकिन बुनिया छोट बोर हो गई। लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सविता, ना पूंछ की जरूरत थी, ना बुनिया छोटा बड़ा था। और मेरा इसलिए सानिध्य सविता के प्रति बनता है। सविता जब छोटी आई थी, जब विद्यार्थी के रूप में आई थी, छोटी विद्यार्थी एडमिशन लेने आई थी, तब से मैं उसको देखता हूँ। और वही हंसमुख छवि, वही उत्साह, वही उल्लास। कहीं कोई भी, आज ये एसोसिएट प्रोफेसर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है। मुझे खुशी होती है अपनी छोटी बहन, छोटी बेटी को अपने बीच में पाते हुए, जो कि सभी का सम्मान करती है और सभी उसके लिए सादर, सानंद और उत्साह से उसके लिए आशीर्वचन दे रहे हैं। मैं तुम्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये संस्थान जिसके लिए शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, तो मैं एक सेकंड मैं लूँगा। ये संस्थान जब बन रहा था तो उसी समय मैंने नेशनल म्यूजियम ज्वाइन किया था और मेरे पास LP साहब ने दायित्व दिया था कि 2 कार्य करेंगे। एक तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और दूसरा उन्होंने कहा था कि इसकी लाइब्रेरी डेवलप करेंगे। तो शुरुआती दौर में आप लाइब्रेरी में देखें तो मेरे दस्तखत ही होंगे, और शुरुआती पेपर देखेंगे तो मेरे ही हाथ के लिखे हुए नोट्स होंगे। तो मैं इस संस्थान का वो धरातल भी हूँ, और उसमें एक शब्द लिखा हुआ था कि राष्ट्रीय संग्रहालय के क्यूरेटर जो हैं एडजंक्ट फैकल्टी होंगे। शायद वो बहुत दिन तक परंपरा चलती रही है और अभी भी चल रही होंगी, पता नहीं। लेकिन इतना तो जरूर है कि ये संस्थान और राष्ट्रीय संग्रहालय या संग्रहालय, पुरातत्व और कला अगर एक जगह आकर निचोड़ होकर वह कलश के रूप में, वह ध्वज के रूप में, प्रतीक के रूप में उभरता है, तो वह राष्ट्रीय, आजकल क्या हो, इंडियन हेरिटेज सोसाइटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, भारतीय विरासत संस्थान NMI था। तो हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपके आतिथ्य के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके सहृदयता के लिए हम सभी हृदय से आपके कृतज्ञ हैं और आभार प्रकट करते हैं कि आप सुखी रहें और हम भी सुखी और हंसते हुए यहाँ से जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय माता। Sir, I further request Dr. Sanjeev Kumar sir and Shri Rajiv Kumar sir to brief the audience about the Pooja Bharti Award. Sir. ये सुखद अनुभव होता है कि आप बार बार बुलाए जाते हैं जब आप योग्य नहीं होते हैं फिर भी। और मुझे वर्ल्ड आर्कियोलॉजी 3 का वो खलीज टाइम्स का मेरा फोटो छपा हुआ आया। उन्होंने लिखा था यंग आर्कियोलॉजिस्ट इन्वेडेड द रोस्ट्रम। आज मैं रोस्ट्रम इन्वेड नहीं कर रहा हूँ, बुलाया जा रहा हूँ। तो खैर, मैं आपको जो भी बात है, डॉक्टर पूजा भारती मेमोरियल अवार्ड के जैसा मैंने कहा था कि डॉक्टर पूजा भारती में हमारी यंग स्कॉलर थी और उनको बहुत ही कम समय में ईश्वर ने हमसे ले लिया।
वो दायित्व लिए हुए थीं कला और इतिहास को प्रमोट करने के लिए, लेकिन वह बहुत बसंत नहीं देख पाए, बल्कि वो बसंत भी नहीं देख पाए जहाँ लोग को चरम सुख मिलता है, यानी कि वो 35 से 37 वर्ष की उम्र में ही इस दुनिया को विदा कर गईं। हमारे साथ उनके पतिदेव और मेरे प्रिय मित्र राजीव जी हैं, और इन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर पूजा भारती, हम लोग चाहते ही थे डॉक्टर पूजा भारती के सम्मान में कला और इतिहास को बढ़ाने के लिए कुछ कार्य करेंगे। तो कुछ चीज़ें था कि चेयर बना देंगे। तो मैंने 2013 में इंडियन आर्टिस्टिक कांग्रेस के पदाधिकारियों से बातचीत की, और हमने कहा कि हम लोग इसमें कुछ पुरस्कार देना चाहते हैं जो कि यंग आर्ट हिस्टोरियंस के लिए होगा, कला इतिहासज्ञों के लिए होगा। इस क्रम में हमने शुरू में 2014 में हम लोगों ने सबसे पहले वी हैव गिवन द फर्स्ट पूजा भारती मेमोरियल अवार्ड टू यंग स्कॉलर अंडर द एज ऑफ 35. Subsequently, it is proposed that we should also recognize the great services, great work of the veterans, those who are 60 years of the age. So we have established a award and prize that is a Bharti Samman for those who are above the 60 years of the age. Subsequently, Dr. Somsekhar and Maruti Nandan Prasad Tiwari ji has requested us, not requested, but we talked it, that कि हम लोग 35 वर्ष के नीचे के लिए कर रहे हैं, 60 के ऊपर के लिए कर रहे हैं, तो बीच वाले के लिए भी तो करना चाहिए। फिर हम लोगों ने 2 प्राइज इस्टेब्लिश किए, और एक का नाम है द पूजा भारती यंग बडिंग स्कॉलर, और दूसरे का नाम है डॉक्टर पूजा भारती प्रॉमिसिंग स्कॉलर आर्ट हिस्टोरियंस। तो ये 4 पुरस्कार हम लोगों ने किए, और ये 4 पुरस्कार लगातार दिए जा रहे हैं। इस बार जो भारतीय सम्मान दिया गया वो स्वर्गीय चित्तरंजन प्रसाद सिन्हा जी को दिया गया, और जो कि अपने आप में योग्य थे। इसके एडवाइज़र थे इंडियन आर्टिस्टिक कांग्रेस के, काशी प्रसाद जोसवाल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, और कई एक्सप्रेशन के एक्सवेटर्स थे, और उनकी योग्यता अपने आप में भिन्न थी। हमारे पास कई लोगों के नाम आए थे, लेकिन एक हमने बहुत, ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं मित्रों, बहुत पारदर्शिता के साथ दिए जाते हैं। इसमें डॉक्टर पूजा भारती मेमोरियल ट्रस्ट का देयर इज नो रोल टू प्ले, इट इज़ ऑल डेमोक्रेटिक वे, एंड वी रिसीव द बायोडाटास, we send to the committees. The committee, it is not known to us, they recommend the certain names and the award is being given. So center is like that. These 3 awards, which is the Puja Bharati Memorial Award, and then the Puja Bharati Budding Scholar and the Promising Scholar. 3 awards are also given by the committee. They select on the basis of paper. This year, certain slightly is there is a lacuna because it was 4 parallel sessions, and the committee members were only 3, so they have not assessed very nicely. Despite all that, we have. So despite all that, we have 14 names came for these prizes. 14 names for these 3 prizes, and it was difficult to select 3. Very difficult to select 3. I don't know. अभी देना है क्या सोमशेखर सर? तो सबसे पहले पूजा भारती मेमोरियल अवार्ड जो इस बार दिया जा रहा है, इसी संस्थान का शोधार्थी है या शोध करता है आयुष कटियार। ये है पूजा भारती मेमोरियल प्राइज अंडर 35 बेस्ट पेपर। बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए।
This prize goes to Pooja Bharati Memorial Award to Ayush Katiyar for the best paper presented by the young art historian. He belongs to this institution only, IEH. Research assistant. The committee has given us the name and they have selected the budding young scholar MS S. Nitya. S. Nitya. The committee has recommended the name of Pooja Sonowal, promising young art historian. Pooja Sonowal from Assam. पूजा सोनोवाल, आई थिंक योर हाथ की तालियां तो जोर से बजनी चाहिए. और अभी कमिटी ने रिकमेंड किया और श्री राजीव कुमार जी ने बातचीत किया. राजीव कुमार जी के भी अपने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ थे. उन्होंने कॉन्टेक्चुअल बेस्ड पेपर के रूप में सान्या गुप्ता का नाम लिया है और जो कि समसामयिक है. उन्होंने रामलला जो विग्रह अभी स्थापित है उस पर पेपर पढ़ा है और उसके जो कालक्रम है उसको दर्शाया है, जो अभी जिसके लिए करोड़ों लोग अयोध्या जा रहे हैं. इस पेपर को राजीव जी के रिप्रेजेंटेटिव ने माना है कि ये जो है वन ऑफ द बेस्ट कॉन्टेक्चुअल पेपर है जिसके विषय में अभी चर्चा है. तो सानिया गुप्ता जी. धन्यवाद आपके स्नेह और प्यार के लिए. इसी तरह से ये नए स्कॉलर आते रहें. बहुत बहुत धन्यवाद जी. I have been asked by the committee that they want to facilitate Dr. Rajiv Kumar for establishing the 4 awards, the Bharti Samman, Pooja Bharti Memorial Award, Budding Scholar Award, and Promising Young Scholar Award. So Dr. Rajiv Kumar and the committee will honor them by felicitate them by their angocha and the
Now I humbly request Professor Dr. B.R. Mani sir, Vice Chancellor, Indian Institute of Heritage, and Professor Dr. Maruti Nandan Tiwari sir, Chairman, Indian Art History Congress, to share joint observation of the conference. मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय को मेरा नमस्कार। सभागार में उपस्थित सभी मित्रों को नमस्कार, जो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, लगभग भारत के सभी क्षेत्रों से हैं, और विद्यार्थियों को शुभकामना और आशीर्वाद कि इस सेमिनार के माध्यम से वॉट एवर दे हैव लर्न, this is a process of learning through seminar, through presentation of paper in the seminar. They do present something, and also they do learn so many things. You give one thing and get so many things. So this is the benefit of the seminar. दो शब्द मैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में कहूँगा। मित्रों ने कहा है, मैं अधिक बात नहीं करूँगा, रिपीट भी नहीं करूँगा। अब मैं यह जरूर कहूँगा कि मैं पिछले 10 महीने से सविता जी को मैंने बहुत परेशान किया है। समय बेसमय फ़ोन करके, अरे सविता जी मैं भूल गया, ये चीज़ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, हो गया, हो जाएगा। कभी भी इनको शिकायत नहीं हुआ कि बार बार ये फ़ोन कर देने, भूल जाए, कोई चीज़ भूल गई मुझे, एक अवस्था और बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन कभी कंप्लेन या कभी ऐसा भाव नहीं आया, बल्कि वेलकम हुआ कि नहीं, अच्छा है आपने मुझे याद दिला दिया। तो आप अपने इस क्षमता को बनाए रखिए, अपनी एकेडमिक कॉम्पिटेंस के साथ जीवन में बहुत काम आएगा, क्योंकि आदमी का व्यक्तित्व, आदमी की पहचान शिक्षा से, ज्ञान से अवश्य होती है, लेकिन ज्ञान के आगे अपना व्यक्तित्व के और सारे आयाम हैं, वो भी बेहद ज़रूरी होते हैं। खैर, हम लोगों ने इस बार वी हैव डिसाइडेड टू हैव डिस्कोर्स ऑन द रेंडरिंग ऑफ एपिक्स इन इंडियन art and culture. Both are interlinked, art and culture. Actually, whatever we find in art is the visual documentation of the culture. What was happening in the society is being represented. तो आर्ट में हमेशा सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है, and that reflection is not merely the document of past for documentation. पक्की बात है, ये मेरा अपना अनुभव है 40 वर्षों के कला संस्कृति के अध्ययन का। बट बियॉन्ड that is to be seen as how to and to what extent it is relevant for the present day, present society, and also for the posterity. Because in India, the art was the outcome of the collective societal wisdom, not individual creation. So the collective wisdom of the society put in the form of writing the texts, they were transformed into visual forms to make it visible and easily understandable.
आप किताब में कोई चीज़ पढ़ते हैं, लिखी हुई चीज़ से देखी हुई चीज़ का प्रभाव और समझ अधिक होता है. ऑलवेज द इम्पैक्ट इज मोर, एंड देयरफॉर आर्ट इज रेलिवेंट. एंड आर्ट, वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा कि आर्ट इज द मिरर ऑफ दिस सोसाइटी. द रिफ्लेक्शंस ऑफ सोसाइटी कुड बी फाउंड इन द आर्ट. और इसका इफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस कुड बी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, and that is our pride, national pride, the two great epics, Ramayana by Valmiki, Mahabharata by Vyas. Today's archaeologists say something from other way of thinking, it may be taken back, that becomes immaterial. Sometimes the time and the date becomes immaterial, the content becomes more important. And in the context of these epics, we find that the content was more important, and those content we are experiencing, we are living in our day-to-day life. Therefore, through the texts, through more than 300, 400 versions of the Ramakatha, Ramayana after Ramayana, coming up to the Ramcharitmanas of Tulsidas, and even after that, it has not yet stopped. The same is being repeated with some regional flavors, variations, because of certain social priorities, social thought process. That has to be accepted. And because of this, we have seen why a particular scene not mentioned in Valmiki is being represented. Or it is altogether represented in a changed way. It is very natural. But Ram will be there. Krishna will be there. And they will be performing whatever they had to do or they did in the best interest of the people and the society. On the one hand, Gita is example, the discourse of Krishna. And on the other hand, the acharan of Ram himself. Without saying anything, this is the difference. And those have been represented in visual art, be it stone art, sculpture in different forms and mediums and modes, painting, and whatever was happening on pan-Indian basis. Just you see. This is the force of Indian culture and the content of the virtue or the best social, ethical, moral values which are put forth through those two epics, that they got spread without any modern tools. And they went even beyond India, that also we know. In Prambanan, prolific representation of Ram Katha. Pantaran, the total Ram Leela. And there you would find certain episodes which are not mentioned in Valmiki, because you would find that in course of time some changes took place. But the central character, central form and central moral ethical values will be sustained, because that was the main objective, not the incidents. And therefore, we took up that subject, because these Ramayana and Mahabharata are in this subject, and I'm really very happy because I have been just rushing from one session to the other session, one room to the other room, listening the papers and even also giving whatever I could contribute. And I
have seen that this is one of the best sessions of Indian Artistic Congress in 32 years of its continuous academic annual sessions, in which very serious, deep, and well thought papers were presented. And that was equal proportion. The senior scholars were there from Chennai, Patna, Kolkata, Mysore, Mumbai, every corner. And as well as equally the young scholars who are going to take over the flag. They are going to be the custodian of Indian culture. Therefore, they must know what India has been, what Indian culture has been, what is the cultural ethos. An ethos more understandable in visual format. Therefore, I feel satisfied and I'm really grateful to my friend Dr. B.R. Maniji when I whispered in his ear at Amarkantak, can we hold next session under your leadership? It was a smile first, but a smile means something. We know, sometimes unspoken words have more vigorous communication. And he has done it very successfully from all the corners. Academically, it was highly fruitful, beneficial for all of us, seniors, juniors, everybody. And also, usually what happens that if the proper sessions are not scheduled, we don't get the time for discussion. But thanks to Savita ji and his entire team, Anupa ji, that they have scheduled it such a way that actually senior, junior, every scholar has got 15 minutes for presentation and at least 5 to 7 or even if it goes 10 minutes for discussions. So the discussion was important and this time it was really up to the mark, up to the satisfaction. And without speaking much, I think I must express my gratefulness in behalf of as Maruti Nandan and also as chairman of Indian Artistic Congress, that with the help of you all my friends of Indian Artistic Congress, I get this strength. Because at this age I am not having very good health, but still I try to work, I try to do something. And you all are inspiration, inspire me. And here the entire team, especially Savita ji, has always inspired. And I can only bless her and wish her all success and offer my gratefulness to my friend Dr. V.R. Maniji. And my pranam to Joshi ji and namaskar to my friend Sanjeev ji. We have been together just few months before at Ram Mandir, just contributing a little bit in construction of Ram temple. So, see Ram मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी. Thank you. Thank you, sir. Now, I would like to request Dr. Sanjeev Kishore Gautam, Director General, National Gallery of Modern Art, to share his words. Respected Dais, most respected, beautiful audience here, Jai Sri Ram to you all. Ji and the entire team of this beautiful session, not only session, the last 3 days, which is very good to
academician, a scholar, as well as such as a student in a modern and contemporary art. विषय की सार्थकता, जब भी सविता जी का कॉल आया और किसी कारणवश मैं मिस कर गया था, मैं पीएवली इन्फॉर्म मी कि कुछ ऐसा सेमिनार में और कॉन्फ्रेंस में सर आपको जाना है. So I was surprised, and same time I feel very happy being an academician, being a scholar, being a practicing artist, कि मुझे अगर ऐसा अवसर मिलता है तो इट्स डेफिनेटली गुड फॉर मी, क्योंकि पिछले 1 साल से शायद मैंने अपने आप को एक अलग दिशा में मोड़ लिया है. 1 साल पूर्व मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय में एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट और बीइंग एकेडमिशियन, बीइंग अ टीचर मैं काम कर रहा था. बीइंग अ आर्टिस्ट, प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट, आई एम वेरी मच इन्वॉल्व विथ माई आर्ट वर्क, विथ पेंटिंग एंड द प्रिंट मेकिंग. बट 1 साल से प्रोफेसर जोशी सर एंड द मनी सर know very well how occupied we are in the Ministry of Culture. Day to day, morning to evening, इतने सारे काम के साथ एक ही मुद्दा, एक ही उद्देश्य लेके हम सब भारत सरकार और भारतीयता, राष्ट्रीय आर्ट एंड कल्चर, कला साहित्य को समृद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं. ये कॉन्फ्रेंस सचमुच इसलिए भी प्रासंगिक है कि सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस बिग एकेडमिशियन हम लोगों ने समय समय पे ज्वाइन किया है. कहीं पेपर प्रेजेंट करने का मौका मिला तो कहीं चेयर करने का मौका मिला. बट जैसे मैंने सब्जेक्ट के बारे में सुना, सो आई फील वेरी हैप्पी कि इसमें बहुत सारा पर्सपेक्टिव है, बहुत सारा ब्रॉडर व्यू है और बहुत सारे लोगों के लिए द राइट डायरेक्शन में विच इज वी नीड. सही समय है, सही विषय है और सही समय पे सही विषय का वाचन करना द गुड साइन फॉर आवर नेशन ऑल्सो. मैं कह सकता हूँ एज डायरेक्टर जनरल, जब मैंने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में ज्वाइन किया 1 साल पूर्व, तो वो समय था जब रामलला का मंदिर में स्थापना और उसका उद्घाटन करने के लिए पूरा देश ललायित था और पूरा विश्व. इनफैक्ट मेरे बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा से भी जब बात होता है तो दे आर वेटिंग फॉर कि 500 वर्षों के बाद राम लला का स्थापना, आगमन अयोध्या में होने वाला है. वी बोथ आर, प्रोफेसर मारुति नंदन सर एंड मी, वेरी वेरी लकी. वी बेस्ड टू आवर राम श्री जन्मभूमि में काम करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ. ये शायद इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्म का कुछ आशीर्वाद हमें था, जिस वजह से हम कुछ अपना गिलहरी कंट्रीब्यूशन जो बोलते हैं वो करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ. आज इस विषय में जब मैंने जिस सेशन को मैं चेयर कर रहा था उसमें कुछ मॉडर्न आर्ट के कुछ डिफरेंट आस्पेक्ट, कुछ डिफरेंट एजेज और whatever so many images which is belong from the progressive artist group and the others, मुझे देखने को मौका मिला. मैं बहुत संक्षेप में कुछ बात कह के ख़त्म करूँगा मैं, क्योंकि मॉडर्न आर्ट के मिथ लोगों में, कॉमन पीपल में काफ़ी है कि मॉडर्न आर्ट मीन्स समथिंग अगेंस्ट टू आवर आर्ट एंड कल्चर काइंड ऑफ. या प्रोग्रेसिव की जब हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेसिव के लिए, उनके बारे में भी कुछ बोला जाता है, लेकिन वो भ्रम है, उसको तोड़ना अति आवश्यक है. जब मैं आज इस विषय के साथ मॉडर्न आर्टिस्ट के बारे में पेपर प्रेजेंट करते हुए कि यंग स्कॉलर ने जब पेपर प्रेजेंट किया, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई. आई फील वेरी हैप्पी कि दिस इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ द लोगों के अंदर अवेयरनेस कैसे डेवलप कर सकते हैं मॉडर्न आर्ट को लेके, विच इज़ वेरी गुड साइन. सो मेनी इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेमिनार, सब लोगों ने बहुत सारा कुछ बोला हुआ है. मैं बस लास्ट में NGMA के
डीजी होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं भारतीय कला संस्कृति को अपने देश ही नहीं बन पूरे विश्व में अपने समृद्धि के उस धरोहर को संरक्षित संवर्धित कर सकूं और उसका पूरे संपूर्ण विश्व में विस्तार के लिए श्रीवृद्धि कर सकूं, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य परायणता में मैं प्रयास करता हूं कि जो भी हो सके अकॉर्डिंग टू दिस टाइम हम बेहतर से बेहतर कर सके, जो आने वाले समय में आने वाले जनरेशन को एक अच्छा एग्जाम्पल के रूप में मॉडर्न आर्ट को देखने के लिए सुखद अनुभूति प्राप्त हो। शायद इसीलिए चित्रकाव्यम रामायण जैसे प्रदर्शनी का आयोजन मेरा पहला आयोजन था एनजीए में डीजी होने के तत्पश्चात। आप सब ने मुझे मौका दिया यहाँ आने के कुछ कहने के लिए, और आप सबको बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस को सुनने और समझने के लिए आप सबको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल। Thank you, sir. Now, I humbly request Professor Dr. B.R. Mani, sir, Vice Chancellor, Indian Institute of Heritage, to share his words. Good evening, ladies and gentlemen. Adarni Professor Joshi, Dr. Gautam, Professor MNP Tiwari, Professor Anupa Pandey, Dr. Somshekhar, distinguished members of the Indian Art History Congress, scholars, students, volunteers, my colleagues in this valedictory function. Professor Tiwari just indicated about the 31st session at Amarkantak, where he told me whether you will be able to organize the 32nd session of the Indian Art History Congress. It took me just 2 seconds and I replied to him that yes, we will be definitely interested in organizing it. And I am thankful that with all the cooperation from the scholars who have come and who, as far as I understand, they are satisfied with their academic sessions, their accommodations, other requirements, and along with them, particularly the brain behind organizing this conference, Professor Anupa Pandey, Dr. Savita Kumari, Professor Manvi Seth, Dr. P.K. Sharma, and all the senior faculty members, the junior faculty members of the of the IIH, the volunteer students, senior research scholars, and the entire staff of this institution came forward to help me. And one secret I would like to reveal today, that out of nil funds, we have tried to manage everything.
I mentioned it on the first day, on Saturday, to our Honorable Chancellor, the Minister of Culture and Tourism, about this, that after breaking the fixed deposits of the organization, we have organized not only this conference, we don't have any money for paying to the staff in the next month. Our excavations are progressing very well in Kurdi, and first batch, junior batch of MA, they are all at the site, but it is the determination of all of us in the IIH that we are continuing. And hopefully, we'll pressurize the government to act upon this. It gives me pleasure to have successfully arranged 38 sessions besides inaugural and valedictory sessions, and also the cultural program which you might have enjoyed yesterday. As it is very well known that Sahitya Samaj ka darpan hai, I would also like to add in this that साहित्य, संगीत और कला ये तीनों समाज के दर्पण हैं. You will recall that there is a very ancient saying, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः. So we believe in that. The Sahitya and Kala both were represented here in this conference, 32nd session of the conference. So I wanted to add Sangeet also in it, and I discussed it with my colleagues, and that then we decided that we'll have one of the most ancient continuing traditions, that is in Dhrupad, which is popular throughout the country, having its origin in the Vedas. So we had even Khayal and Bhajan yesterday in the same Dhrupad style. And many things were dedicated to the theme of the session. I'm grateful to the Chancellor and the former Chancellor of the Institute who came for the inauguration function. But I'm very much thankful to my colleagues, faculty members, staff, students, and research scholars who did not care for day and night and added in making this session a very successful one, as I believe. So, I would say that the credit for this session goes to all of them and to the distinguished participants. और अगर इसमें किसी तरह की त्रुटि हुई हो या हमसे कोई कमी रही हो तो उसका जिम्मेदार मैं अपने आप को खुद मानता हूँ.
So we are all eagerly waiting to hear Professor Joshi, and I think I'll just ask my colleague, our student, to go ahead with this. Jai Bharat, thank you very much. May I now request our chief guest, Professor Sachidanandan Joshi, to kindly deliver the valedictory address. Sir. Dr. Professor Sachidanand Joshi, sir, to kindly deliver the valedictory address. अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय. 32nd session of Indian Art History Congress, and in this valedictory session, the Honorable Vice Chancellor of the Indian Institute of Heritage, Professor B.R. Mani, the Chairperson of the Indian Art History Congress, Professor Maruti Nandan Tiwari ji, the Director General of National Gallery of Modern Art, Dr. Sanjeev Kishore Gautam ji, the Secretary General, Professor Som Shekhar ji, and Senior Professor of this institute, Professor Anupa Pandey ji, and the convener of this entire Congress, Professor Savita Kumari ji, distinguished participants of this conference, esteemed faculty members, and dear students. It is indeed my pleasure to be here on the valedictory session of this Congress, and I have been listening to the expressions, observations given by the participants, and I can vouch for it that this has been one of the most successful conferences which was conducted by Indian Art History Congress and Indian Institute of Heritage. So a big round of applause for all of you who are there. So having said that, I was in a fix because the booklet which was given to me at around 1:30. So I just saw that there is a valedictory function and valedictory address by Professor Sachidanand Joshi, 5.10 to 6.10. No, I was under this impression that I am supposed to speak for 1 hour. So having seen your patience and endurance and tolerance, should I go ahead with this program or should I curtail my speech? I don't know whether the kind of financial situation which Dr. Mani has referred to, they do have a provision of dinner tonight or not. Or maybe only a high tea or a cup of tea with biscuit would end up with the valedictory session. So if I keep on talking for 1 hour, then definitely कुछ नहीं तो कम से कम सब्जी पूड़ी तो खिला दो भाई. अब कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है. ये एक पकाऊ अतिथि आ गया जिसने 1 घंटा और खा लिया हमारा. So that was there. But anyway, I must congratulate Professor Mani and his entire team for organizing this wonderful conference. And since we all work under the same umbrella, we all know, हम सब एक ही दुख के सहभागी हैं, हमको सबको मालूम है. But the government knows that if they don't have money, no problem, they have money. So he can do everything. So I know that the time is already, we have surpassed the given time, and I should not speak much. Although I have 15 pages written, maybe I can go on talking. And even I read it without comma, full stop, it will take not less than 45 minutes, which entitles us for a sumptuous dinner anyway. But I'll not go to that. But
my purpose of coming here was not to address people who are sitting in the front rows of this auditorium, but to address the people who are sitting at the back rows of this auditorium. Because आप बुरा मत मानिए, हमारा तो जो होना था वो हो गया. इस देश को अगर आगे ले जाना है तो उनका कुछ तो भी होना चाहिए, और उनका होने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को कैसे आगे ले जाते हैं. इसके पहले मैं आपको दो बहुत छोटे छोटे बहुत ही ताज़ा उदाहरण देता हूँ. एक तो उदाहरण बिल्कुल कल रात का, कल शाम का है. मैं कल मुंबई में था और एक ऐसी ही एक बहुत क्लोज पार्टी अटेंड कर रहा था जहाँ पर फैमिली के लोग थे. तो एक परिवार जिसमें पति पत्नी और उनका एक बेटा था, तो उन्होंने अपने बच्चे को मुझसे इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि इसने 10th पास कर लिया है. तो एक स्वाभाविक सा सवाल होता है कि व्हाट वुड यू लाइक टू डू. जो जवाब उस बच्चे ने दिया वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ. उसने कहा कि आई वॉन्ट टू परस्यू आर्कियोलॉजी, और मैं आर्कियोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ. आई वॉज सरप्राइज. मैंने कहा इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आजकल वकील बन रहे हैं, मैनेजमेंट आ रहे हैं, ये आर्कियोलॉजी कहाँ से तुमको सूझ गया. तो जो जवाब उस बच्चे ने दिया उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो उन बच्चों के लिए बहुत प्रेरणा की बात होगी. उसने कहा कि सर, एक तो मैं कॉन्फिडेंस देख के, उसने अंकल, चाचा जी, ताऊ जी, दादाजी कुछ नहीं कहा. उसने कहा सर, सब इंजीनियर, डॉक्टर बन जाएंगे, बिल्डिंगें बना लेंगे, पर जो हेरिटेज हमारे पूर्वज छोड़ गए उसको जानने वाला कौन रहेगा. दैट इज व्हाई आई वुड लाइक टू परस्यू. तो सर, ये जो आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस है, इसका पर्पस हम एकेडमिशियंस के लिए तो जो कुछ है वो है ही, बट वी शुड ट्राई टू बिल्ड एन एटमॉस्फेयर वेयर मोर एंड मोर यंगस्टर्स लाइक दिस कम फॉरवर्ड. And he was not only, the child was not only responding superficially. I said that then which institute you would like to go to? And he said that my first preference would be Deccan College, Pune, because that is supposed to be the mother of archaeology in India. तो इस बच्चे को मालूम है कि डेक्कन कॉलेज पुणे में जाके मुझे पढ़ना है. उसको मालूम है कि प्रोफेसर देगलूरकर कौन है, उसको मालूम है कि प्रोफेसर जामखेड़कर कौन है. He takes all those names, and that is how this younger generation is prepared. हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उनकी थाली में सही चीज़ को ले जाके परोसें. ये हम स्कॉलर्स का उद्देश्य है. ये कॉन्फ्रेंस एक कमरे में, एक बड़े हॉल में, एक ऑडिटोरियम में हम सब के बीच हो जाएगी. 129 पेपर भी हम पढ़ लेंगे, और इसमें से अगर एक भी लफ्ज़, एक भी लाइन उस यंगर जनरेशन तक सीधे ढंग से परकुलेट नहीं हुई, तो ये सारी किताबें किताबों में दर्ज होकर रह जाएंगी. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज द काइंड ऑफ variety we have in our country. We are talking about the rendering of Indian epics in art and culture, and we are basically confined, or we are taking the examples of Ramayana and Mahabharata because those are two major epics. जबकि हमको मालूम है हमारे शास्त्रों में उसे इतिहास कहते हैं, मैथोलॉजी नहीं कहते. ये बहुत सारे लोग अभी माइथोलॉजी शब्द में अभी भी हम लोग पढ़े हुए हैं, और हम इस यूरोपियन कंस्ट्रक्ट को, जो वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है, जिसने हमको सिखा दिया कि ये माइथोलॉजी है क्योंकि ये मिथक है. अभी हमने एक पेपर को इनाम दिया जिन्होंने प्रभु श्री राम के विग्रह की बात की है, और हम जानते हैं कि हम मिथकों में बात नहीं करते, हम रियलिटी में बात करते हैं. और जितनी जल्दी हम इस माइथोलॉजी शब्द को अपने दिमाग से हटाएंगे उतनी जल्दी हमारा कल्याण होगा. मराठी वाला कल्याण नहीं, हिंदी वाला कल्याण होगा. तो ये इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने चीज़ों को सही ढंग से देखें और समझें कि भारत में इस परंपरा की कितनी उदात्त वैरायटीज़, कितनी उदात्त प्रकार हमारे देश में हैं. राम कथा के हमारे देश में कितने प्रकार हैं? अगर कोई कैलकुलेट करे, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे. 300 से ज़्यादा प्रकार से हमारे देश में राम कथा कही पढ़ी सुनी जाती है, जिसमें शास्त्रीय भी है, अलग अलग भाषाओं के भी प्रकार है, और ऐसे असंख्य लोक प्रकार भी हैं. अभी कोई कहीं बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि कैसी भी राम कथा हो, राम होना चाहिए.
मैं आपको एक ऐसी राम कथा बताता हूं जिसमें लक्ष्मण हीरो है। गोंडी अगर आपने देखी हो राम कथा, तो गोंडी पूरी की पूरी राम कथा में लक्ष्मण हीरो है, लेकिन कथा राम की है। तो हमारे देश की जो वैरायटी है, हमारे देश की जो व्यापक वैविध्य है, उस व्यापक वैविध्य के अंदर उसको सहेज कर रखना, संभाल के रखना, नई पीढ़ी तक उसे पहुंचाना, ये दायित्व आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस का है। और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इस बारे में हम सबको सोचना है। हमने कुछ दिनों पहले एक कॉन्फ्रेंस की थी, रीजनल वेरिएशंस ऑफ महाभारत। महाभारत में क्या क्या रीजनल वेरिएशंस हैं, किस तरह से महाभारत हमारे क्षेत्रों में डिपिक्ट होती है। हम सब जानते हैं वेद व्यास जी ने जो पूरा का पूरा भारत ग्रंथ लिखा, जय ग्रंथ लिखा, उसके अंदर से सारी चीजें निकल के आई, लेकिन उसके भी रीजनल वेरिएशंस, अलग अलग कथाएं हैं। अभी इसमें आपने एक पेपर है पांडुन के कड़े, आप देख रहे हैं कि वो पांडुन के कड़े क्या बात करती है और उसमें कौन सी महाभारत पढ़ी जाती है। जिन्होंने ये पर्चा पढ़ा होगा उनको संभवतः ये बात मालूम होगी कि वो कैसी लिविंग ट्रेडिशन से ये पांडुन के कड़े हमारे यहाँ आते हैं, या जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं या छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं, उन्हें मालूम है कि कैसे पंडवानी में महाभारत की कथा का एक नया आख्यान आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह के आख्यानों को, या उत्तराखंड में अगर मैं गलत नहीं हूं तो दुर्योधन का एक मंदिर है, ऐसा भी एक आख्यान है। तो इस तरह की जो भारत की जो विविधतापूर्ण ट्रेडिशन है, उस विविधतापूर्ण ट्रेडिशन को डॉक्यूमेंट करके उसको प्रॉपरली पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो भारत का जो स्वरूप, जो भारत का जो विराट स्वरूप पूरे विश्व के सामने आएगा, वो विराट स्वरूप भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम आएगा। उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमको ये भी दिखना है कि ये जो सारे के सारे वेरिएशंस हैं, ये अपनी अपनी जगह पे शाश्वत लिविंग ट्रेडिशन में है। जहां पर है, कर्नाटक में है तो कर्नाटक का जो लिविंग ट्रेडिशन है अपने आप में शाश्वत है, उसमें उसके मन में कोई भ्रम नहीं है। भ्रम हम एकेडमिशियंस के मन में है, जो इसके प्रैक्टिसिंग लोग हैं उनके मन में कहीं कोई भ्रम नहीं है। वो अपनी उसी ट्रेडिशन के हिसाब से वहाँ पर जी रहे हैं। उन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना, उन सारी चीज़ों को जनता के सामने प्रस्तुत करना, पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करना, उसको लेकर हमारी चिंता होनी चाहिए। और अगर वो चिंता हमारी आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस में कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है तो शायद हम हमारे उद्देश्य के लिए बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इसको भी सोचना होगा। एक छोटा सा एक और संदर्भ मैं आपको देता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम लोगों के जीवन में से प्रसंग आते हैं, हमको कई जगह मुख्य अतिथि बन के जाना पड़ता है। तो 2 स्कूल के एनुअल फंक्शन में मुझे मुख्य अतिथि बन के जाना पड़ गया। मैंने भी कहा कि स्कूल के फंक्शन में मैं जाके क्या करूँगा, लेकिन जो उन्होंने टॉपिक दिया था तो मुझे रस उत्पन्न हो गया, क्योंकि एक स्कूल ने कहा कि सर हम इस बार दशावतार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम पूरे के पूरे स्टूडेंट्स को लेके 600 स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग दशावतारा ऑन स्टेज। फिर एक स्कूल में आया कि हम नवरस प्रस्तुत कर रहे हैं। They included 750 students from class 6 to class 8th and they all performed नवरस। एक और स्कूल में गया अभी पिछले हफ्ते, वहाँ पर कर्ण की लाइफ पर पूरा का पूरा एक बैले प्रस्तुत किया जिसमें 250 बच्चों ने काम किया। मैं ये संदर्भ आपको क्यों दे रहा हूँ, ये संदर्भ, और ये तीनों स्कूल्स आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, एलीट स्कूल्स हैं जिनको आप हाईली पेड पब्लिक स्कूल कह सकते हैं। यानी क्या हो रहा है, अब ग्रीक ट्रेजेडी, यूरोपियन ट्रेजेडी, ऑपेरा का ट्रेंड बदल रहा है। नई पीढ़ी के अंदर इन सब चीज़ों को जानने समझने की उत्कंठा आ रही है। तो अगर इस पीढ़ी के सामने जानने समझने की उत्कंठा आ रही है तो उस पीढ़ी के सामने हमें सही शास्त्र और सही संदर्भ प्रस्तुत करना, ये हमारी बहुत अधिक आवश्यकता है। महाभारत में एक जगह कहा गया है, इतिहास पुराणाभ्या वेदम समप ब्रूहम्येत विभेत्यल्प श्रुताद्वेदो मामह प्रतिहारिष्यति। यानी वेदास आर टू बी कॉम्प्लीमेंटेड विद द रीडिंग्स ऑफ इतिहासास एंड पुराणास। इवन द वेदास फील थ्रेटन्ड बाय समवन हु इज इग्नोरेंट ऑफ दिस श्रुति ट्रेडिशन। ये जो हमारी श्रुति परंपरा है, उस श्रुति परंपरा का साक्षात हम सबको करना है, और उस श्रुति परंपरा को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं उसको भी हमें हमारे कहीं न कहीं पूरे अध्ययन में शामिल करना, ये हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जब हम हमारी आर्ट हिस्ट्री की ट्रेडिशन को देखते हैं, आर्ट के डिपिक्शन की ट्रेडिशन को देखते हैं, तो हमको बहुत सारी कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स भी समझ में आते हैं, उसको भी देखना है।
और वो इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स क्या हैं, वो विशेष करके हमारी युवा पीढ़ी को बहुत शायद रुचिकर लगे। कि आप देखिए कि आर्टिस्ट ने या हमारे जो रचयिता हैं जिन्होंने भी कोई चीज़ क्रिएट की है, उन्होंने अपनी कितनी ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम का इस्तेमाल करते हुए अपनी चीज़ को डिपिक्ट करने की कोशिश की। कितनी वैरायटी आपको मिलती है, वो क्यों मिलती है? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी क्रिएटिव फ्रीडम को इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को एक्सप्रेस करता है। इसके साथ ही उनके दिमाग का जो खुलापन है, ब्रॉड माइंडेडनेस, आप उसको भी देखिए तो आपको समझ में आता है कि इतना उपमंडुक होके संकुचित होके हमारे यहाँ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म कभी नहीं हुए। हमारे यहाँ बहुत विराट, बहुत बड़ा दृष्टिकोण लेके हमारे सारे आर्ट फॉर्म्स डिपिक्ट हुए हैं। और उससे बड़ी बात है कि उनकी सबकी क्लैरिटी ऑफ थॉट है, क्लैरिटी ऑफ डिपिक्शन है। हम नहीं समझ पाते कि वो क्या बताना चाहते हैं, पर उनके अंदर पूरी की पूरी स्पष्टता है, पूरी की पूरी क्लैरिटी है कि वो अपनी बात को कैसे कहना चाहते हैं। और उसमें उनका अपना नैरेटिव छुपा हुआ है। आजकल बहुत हम लोग बात कर रहे हैं नैरेटिव बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, और पूरे के पूरे विद्वानों का मंथन होता है। वहाँ एक कलाकार अपनी एक छोटी सी कलाकृति से पूरा का पूरा नैरेटिव सेट कर देता है, इतनी उसके अंदर क्लैरिटी रहती है। और इसके साथ ही उनकी क्लैरिटी है अबाउट सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्टेटस। ये सारी बातें, ये सारी बातें क्यों हम कह रहे हैं? ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो हमारा भारतीय समाज है, कलाओं के माध्यम से, जैसे प्रोफेसर तिवारी ने कहा, कलाओं के माध्यम से इतना व्यापक और उदात्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करता था कि हम भारतीयों के लिए ये कूपमंडुकता, संकुचित भाव, ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती। हम बहुत व्यापक थे, हम विराट थे, हम उदात्त थे, हम वैसे ही हैं और हम वैसे ही बने रहना चाहते हैं। और उसके अंदर कलाओं की अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं मणि साहब को कह रहा था कि इन दिनों में आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। किसी दिन ये सारे बहुत डिजिटल टेक्नोलॉजी वाले मेरा बहिष्कार करेंगे, पर फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो क्रिएटिविटी है, ये इनहेरेंट क्रिएटिविटी है, ये भारत की जो नेचुरल क्रिएटिविटी है, हम हमारी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने अनावश्यक रूप से सरेंडर कर रहे हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे तो और आगे 5-10 साल में हमारे अंदर का जो स्वाभाविक रचनात्मक भाव है वो कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर होगा। हम में से बहुत लोग आज से पहले, यानी आज से 20-25 साल पहले, कम से कम 200, 300 टेलीफोन नंबर्स याद रख सकते थे। आज आपको 4 टेलीफोन नंबर याद नहीं रहते। और ये हमारी स्थिति नहीं है, बच्चों की भी स्थिति वैसी हो गई है। तो हम क्या कर रहे हैं? आज किसी रचना की बात करते हैं तो बच्चा कहता है कि हम चैट जीपीटी से आपको 10 कविताएं बना के सुना सकते हैं। हम कहते हैं एक कविता लिखने में था कालिदास ने लिखी होगी, मैं तो 10 कविताएं ऐसे लिख के दे सकता हूँ। मैथिली शरण गुप्त जैसी शैली में लिख सकता हूँ, सुब्रमण्यम भारती जैसी शैली में लिख सकता हूँ। आप तो मुझे बताइए, मैं लिख सकता हूँ। पर आपकी इनहेरेंट क्रिएटिविटी का क्या होगा? वो इनहेरेंट क्रिएटिविटी जो हमारे कलाकारों ने, हमारे मनीषियों ने आज से 1000 वर्ष पहले कहीं ना कहीं हमारे अलग अलग माध्यमों से हमको प्रकट की थी। मंदिरों के शिल्पों में प्रकट की थी, शिलालेखों में प्रकट की थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स में प्रकट की थी, मिनिएचर पेंटिंग्स में प्रकट की थी, और कहाँ कहाँ प्रकट की थी। वो सारी की सारी हमारी इनहेरेंट क्रिएटिविटी को अगर जगाए रखना है तो वो रोल सबसे बड़ा प्ले करेंगे आर्ट हिस्टोरियंस। उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट करके बताएंगे कि कौन सी चीज़ ऑथेंटिक है। आप लोगों को बताएंगे कि इस चीज़ का महत्व क्या है, इसकी पुरातनता क्या है, और इसकी पुरातनता के बाद भी ये कैसे इतने वर्षों तक जीवंत रहती है। ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम इस बात को सही ढंग से बता सके तो फिर समाज में अच्छी तरह से ये बात चली जाएगी। इसके साथ ही हमें ये भी ढूंढना होगा कि हमारे यहाँ नए से नए कौन कौन से रिसर्च एवेन्यूज हैं जहाँ पर बच्चे शोध कर सकते हैं। आज दुख होता है, दुर्भाग्य है कि बहुत सारी बातों का आज भी नैरेटिव यूरोपियन हिस्टोरियंस सेट करते हैं। आज भी हमको हमारी बातों के वैलिडेशन के लिए यूरोप की तरफ ताक कर देखना पड़ता है। आज भी हमें मालूम करना पड़ता है कि अगर हमारी कोई सी चीज़ ऑथेंटिक है या बहुत पुरानी है, तो हम कहते हैं कि ज्ञान परंपरा के इतने बड़े देश में, इतने विशाल देश में ऑथेंटिकेशन हम नहीं कर सकते क्या? हमने ऐसा इकोसिस्टम क्यों नहीं डेवलप किया, ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं डेवलप किया? यानी ये तो वही बात हुई कि मेरे घर की अच्छी चीज़ को बताने के लिए मैं बाहर वाले से सर्टिफिकेट लूँ कि आप बताओ कि मेरे घर की चीज़ अच्छी है कि नहीं। इस सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं।
तो क्या हम उस इकोसिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, उस इकोसिस्टम को जिसमें हम बेहतर से बेहतर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज युवाओं को दे सकें। आज आपने 4 युवाओं को बहुत अच्छे पुरस्कार देके सम्मानित किया, बहुत अच्छी बात है, पर क्या उस तरह के हम ऐसे युवा निकाल के दे सकते हैं जो ऐसे 100 शोध कर सकें, जो नए के नए विषयों पर 100 शोध आ गए, हम दुनिया के सामने चैलेंज प्रस्तुत कर सकें, rather than being on a defensive mode and justifying whatever we have done, we should give them the initiative to ask them to, if you have the courage, validate, I have done my job. Can we do this? Can we initiate a process where our research are so much authenticated that they are genuinely accepted by the entire global world? इसको देखने की जरूरत है, ये स्कॉलरशिप को देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो हम सब एकेडमिशियंस के लिए भी लागू होती है, और आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाइए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ हिस्ट्री के कोर्स सबसे ज़्यादा डिमांड में है। सबसे होशियार विद्यार्थी हिस्ट्री लेता है या इंग्लिश लिटरेचर लेता है। हमारे यहाँ लेता है क्या? हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम दूसरी है। जबकि हम अपनी परंपरा पे, अपनी पूरी की पूरी लेगेसी पे गर्व करते हैं, तो हम क्या ऐसा वातावरण नहीं बना सकते कि हमारा जो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी है, द बेस्ट स्टूडेंट शुड कम टू लर्न हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री, कोई भी हिस्ट्री है, वो पढ़े ना, हमारा बेस्ट स्टूडेंट इधर आए, क्योंकि वो बेस्ट स्टूडेंट आएगा तो वो पूरी दुनिया को सही चीज़ जाके देगा। जब वो पूरी दुनिया को सही चीज़ जाके देगा, तब जाकर आप 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कह सकते हैं। और इसलिए सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना यानी हिस्ट्री पढ़ना नहीं है, हिस्ट्री के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमको जानना चाहिए। आज हमारे यहाँ आइकोनोग्राफी पढ़ने और समझने वाले कितने लोग हैं, आज हमारे यहाँ पैलियोग्राफी पढ़ने और समझने वाले कितने लोग हैं, आज हमारे यहाँ न्यूमेस्मेटिक्स को समझने वाले कितने लोग हैं। मैं नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन को कई दिनों तक देखता रहा हूँ, मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी को जानने समझने वाले कितने लोग हैं। आज लैंग्वेज टीचिंग में स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में फर्क बताने की स्थिति नहीं है इंस्टीट्यूशंस। देयर आर वेरी फ्यू पीपल, स्टूडेंट्स, आई विल नॉट talk about teachers, but there are students who cannot differentiate between script and language, and we claim that India has the largest collection of manuscripts in the entire world. So look at the irony. At one place there are people who are not even in a position to tell you about the difference between manuscript and language, and still we have more than 2 crore manuscripts in the entire country. तो ये जो गैप है, इस गैप को भरना जरूरी है। और ये गैप कब भरेगा? जब आपके जैसे सुधी विद्वान, आपके जैसे स्कॉलर्स इन बच्चों के साथ उस तरह से कदम मिलाकर चलें जिससे आपको समझ में आए कि नो, हम सुपीरियर, हम आपको कुछ सिखा नहीं रहे हैं, लेट अस कम जॉइन टुगेदर, हम वी मेक अ टीम, आप और हम दोनों मिलकर काम करें। और जब हम दोनों मिलकर काम करेंगे तब निश्चित तौर पर पूरी के पूरे इस हिस्ट्री के परिदृश्य में, विशेषकर आर्ट हिस्ट्री के परिदृश्य में कुछ नई बातें, कुछ नया शोध, कुछ नई कहानी निकल के आ सकती है। तो एक ऐसे भारत को बनाने की हम सबकी जिम्मेदारी है, और एक ऐसा भारत जिसका मूल आधार कला और संस्कृति का हो। ये बार बार मैं कहता हूं कि भारत की जो आइडेंटिटी है, वो भारत की आइडेंटिटी मूलतः और अंततः एक सांस्कृतिक देश की आइडेंटिटी। वी आर नोन बाय अवर कल्चर, वी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय अवर कल्चर। बाहर जाते तो कोई आपसे नहीं कहता कि आप बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है या इकोनॉमिक पावर है या साइंटिफिक पावर है। भारत के बाहर आप जाते हैं तो पहला वाक्य निकलता है, इंडिया यू आर अ ग्रेट कल्चरल कंट्री। आपकी संस्कृति बहुत महान है, और संस्कृति महान है इसीलिए इतने साल के आक्रमण के बावजूद भी भारत का मूल ताना बाना टिका हुआ है। ये बात आप ध्यान रखिए, उसमें हमारा आपका कोई योगदान नहीं है। हमने 4-5 किताबें लिख ली इसलिए संस्कृति नहीं टिकी है। संस्कृति इसलिए टिकी क्योंकि भारत की संस्कृति का मूल ताना बाना, पाया इतना मजबूत है। वी आर नोन बाय अवर कल्चर। तो जब आपको आगे बढ़ना होता है, हमको एक कहावत बताएगी, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। सो व्हाट इज माय बेस्ट फुट?
माई बेस्ट फुट इज कल्चर। तो उस संस्कृति को लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में विचार, उसके बारे में चिंतन और उसके बारे में नई पीढ़ी के साथ संवाद, मुझे लगता है कि ये आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ी सफलता होगी। और आने वाले समय में हो सकता है कि आज आपको मेरी बातें थोड़ी अटपटी भी लग रही हों, लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए कि आने वाले समय में यही बात है जो हमको और आपको सबको आगे ले जाने वाली है, क्योंकि हमको उस पीढ़ी को देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्योंकि अगर हम 25 साल बाद के भारत को देखते हैं तो 25 साल बाद के भारत में हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग हों भी, पर शायद ऐसी स्थिति में न होंगे कि हम कुछ कर पाएं। करना उन्हीं लोगों को है। तो उन लोगों के सामने हम कैसी दुनिया दिखाएं या उन लोगों के सामने हम कैसा भारत पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करें, इसकी जिम्मेदारी आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जैसी प्रमुख संस्थाओं के पास है। और मुझे बहुत खुशी है कि आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस का ये जो 32वां अधिवेशन है उसमें आप सब ने मिलकर इस महायज्ञ में अपनी आहुति दी है। और जैसा एक प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है जहाँ बहुत सारे लोग डुबकी लगाकर अपने आप को और अपने कर्मों को पवित्र कर रहे हैं, वैसी ही एक प्रयाग यहाँ भी है जहाँ पर ज्ञान की गंगा है, जिसमें सब आप्लापित होकर भारतीय संस्कृति की गंगा में डुबकी लगाएं और पूरे देश का कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your encouraging views. I now request Professor Dr. D.S. Somsekhar, General Secretary, ICHR, to convey vote of thanks. Ladies and gentlemen, I don't take much time, but being thankful is a part of our culture. Therefore, wholeheartedly we have to express our thanks to the organizers and many people who are responsible for the success of this conference. Really, we did not know all those things that Dr. B.R. Maniji revealed to us. Sir, in spite of all those constraints, the initiative you have taken to conduct this 32nd session of Indian Art History Congress has highly moved us, sir. Has highly moved us. Hats off to you, sir. It is said, the wearer only knows where the shoe pinches. The organizers themselves will be knowing what sort of problems they are facing. We come here as guests for 3 days and we look at things in our own way and we go back. In spite of having their own problems and constraints, when they have made this beautiful, really I don't know how to thank them. Contextually, I am tempted to quote a quotation of Charlie Chaplin. I wish to walk in the rains because nobody can see my tears. He says so. The one are the ones who want to make others happy. They really don't care for their own happiness. In this context, I must say, whenever we met Dr. B.R. Maniji, he has been very cordial with a smiling face. Again, I wish to quote from Kalidas, Bhavanti namras tharavaha phalagamaihi navam bhubi bhuri vilambino ghanaha anuddhataha satpurushaha samruddhibihi swabhava eva isha paropakarinam. Which means, when clouds are filled with water, they come down. Trees laden with fruits, they bend. In the same way, great people, humble people, they are humble in prosperity.
these smiling faces really absorb us because of such qualities. Sir, because of you, last time in the Amarkantak conference itself, we could leave a sigh of relief that the 31st session would be conducted here in this great institute. For your great initiative, generosity, kindness, benevolence, and unparalleled leadership for the success of this conference, we are all highly thankful to you, sir. We are equally thankful to Professor Sachidananda Joshi ji, Member Secretary, IGNCA New Delhi. The way he delivered the things right now have been so enlightening. Whatever I said of Dr. Mani ji are equally applicable to you also, sir. Perhaps you condensed your valedictory address keeping in mind the time factor. And if you can kindly give us your written valedictory address, we consider it our great pleasure and privilege to publish it in our proceedings. It will be printed next year. Dr. Parmita Das, she will note this point, I suppose. Another person who is highly responsible for the success of this conference is Dr. Savita Kumari. Our chairman has already said it, and my friends as delegates, they also have expressed it. I have understood that this life is nothing but fulfilling responsibilities. And when we take up some responsibility, it is to be fulfilled. And she has been into arranging all these things for the last 3-4 months, I suppose. Whenever we contacted her for anything, we did not receive no answer from her. For anything and everything, she said, okay, sir, it will be done. Sir, it is done, sir. Almost immediately. I used to tell our chairman, sir, really, I don't know how their team is working in Noida. They are so efficiently doing the things. He just smiled and he used to say, you will come to know of it. Just the day before the commencement of this conference, Dr. Savita Kumari was sick. And our chairman said, our convener and local secretary is not doing well. Her really, it did upset me. Because the one who has taken the initiative must be in proper shape in doing the things. But her positive mind gave her strength, and she was here with a smiling face from the very first day. And Madam, we are highly thankful to you for all the wonderful work you have done. Behind leaders, there is always a committed team. Though it appears to be an individual performance, in reality, it is a teamwork. Without a committed team, no leader can be successful. My friend Dr. Mohan mentioned while speaking here that in this booklet of abstract they have published the names of all the volunteers, let alone the professors and such other faculty members, the office staff, etc. They have mentioned each and every name of the volunteer. It is a precedent for any organization, any institute, I suppose. In small proportions, we just beauty see, and in short measures, life may perfect be. This is what poet Tennyson says. A leader will always keep in mind even the minute thing which is highly important in achieving anything. In the drama, it is said, there is only a small actor, but there is no small role.
Even if a small role is spoiled, the entire show is spoiled because I am from the stage background. I'm telling this. Therefore, Indian Art History Congress is highly thankful to this great committed team which has been responsible for the success of this conference. I thank all the faculty members, all the research scholars, all the students, and the volunteers. This building, to my wonder, it made me think of the prowess of the architect, because this is the one place where I have not been able to go anywhere, the place I wanted to go and locate the things. Always we were helped by the volunteers, not only for this, for anything. Therefore, I want to thank all of you for your wonderful work. I want to thank Dr. Anupa Pandeyji for the great cooperation you have extended in making this conference a great success. Our General President is not present here, but we are equally thankful to her for sparing her valuable time to be with us and give her address and also her valuable advice and all. I thank Dr. Satyamurthy ji for delivering Professor K.D. Bajpai Memorial Lecture. I thank Dr. Sabyasachi Mukherjee ji for delivering Dr. R.D. Chaudhary Lecture. I thank Dr. Rajiv Kumar ji for your kind gesture of coming over here and being with us. I must say one thing at this juncture, that this world is more sustained by good-heartedness, not by intelligence. This is what Gandhi said once. One of our senior scholars, Dr. Kumud Kanitkar, has come forward to donate 10 lakh rupees to Indian Art History Congress to carry on this kind of activities eternally. Madam, we are highly thankful to you for your kindness and generosity, madam. And madam has said that the interest this money earns every year can be made use of for publishing Kala. Kala, our journal, contains articles written by outstanding scholars of national and international reputation. Madam wants to contribute for that to be published throughout. And as far as this conference is concerned, regarding the concept note, it was written by one of the senior scholars, Dr. Nandita Krishna. She is the director of C.P. Ramaswamy Iyer Institute, Chennai. But unfortunately, due to personal reasons, she could not turn up. In the same way, Dr. Chudamani Nandagopal, she was the coordinator for 2 online workshops. For personal reasons, she also could not turn up. Dr. Durga Basu, one of the editors of our journal, she also could not attend this conference. This way, there are other scholars also. They could not attend. They are senior scholars and they have contributed a lot for the development of this organization. Even in their absence, I thank them on behalf of Indian Art History Congress. As it is already revealed, the next conference would be conducted in Bangalore, in the Mythic Society, and the initiative to conduct the next session was taken by one of the advisors and the research director
of Mythic Society, Professor Srinivas Padigarji. Because of his efforts, all of us will be going to Bangalore next year, and I thank him profusely on behalf of Indian Art History Congress. I thank all the delegates who have come with all enthusiasm and who have presented wonderful papers. As I said in the very beginning, we are so fortunate to have very potential young scholars. They are our hope, and they will surely hold our banner very high in the years to come. I thank the media persons and everybody who is responsible for the success of this organization. And once again, sir, we are all thankful to you for inviting us to this great institute and giving us such a wonderful treat and everything. We say in our tradition, Annadata Sukhi Bhava. Therefore, let this institute reach very great heights. Let everyone who works here be happy in life. Thank you, one and all. Thank you, sir. Now, we would like to play a glimpse of 5 minutes about the 3-day memories of the conference, followed by vote of thanks by Dr. Savita Kumari. Thank you. Very good evening to all of you, and the eminent scholars and the dignitaries on the dais have declared this conference a success, and I would like to dedicate this success to the two gurus who are on the manch, Dr. B.R. Mani and Professor Anupa Pandey. I am their student, and throughout, when we were preparing for this conference, I had only one agenda, one mission in my mind, that I should not let them down. So I hope I have not let you down. So that was the only aim behind preparing for this conference. So thank you so much for the opportunity. I would like to formally offer the vote of thanks. I'm honored to deliver the vote of thanks on behalf of Indian Institute of Heritage at the valedictory function. First of all, I express my gratitude to Professor Sachidanand Joshi, the chief guest of the valedictory function, for accepting our invitation and to deliver the valedictory address. Thank you, sir. I express my thanks to the guest of honor, Professor Sanjeev Kishore Gautam, DG NGMA, for his presence. I extend my sincere gratitude to our Vice Chancellor, Professor B.R. Mani, under whose guidance the entire program has been carefully organized. My heartfelt gratitude goes to the Chairman of Indian Artistic Congress, Professor Maruti Nandan Tiwari ji, for helping us at every step. Thank you, sir. I am grateful to Professor Somashekhar, General Secretary, Indian Artistic Congress, for his constant support in preparing this conference. I am thankful to Professor Emeritus of the Department of History of Art and my teacher, Professor Anupa Pandey, for her immense help throughout the preparation of this conference. And if this conference has done well, it is because of her training. So whatever I have learned from her, I try to translate that. So thank you so much, ma'am. Thank you so much. And a special thanks to Dr. Sushma Mani, who has come and graced the occasion. Thank you, ma'am, for coming and being with us. I'm grateful to the executive board members of the Indian Artistic Congress. For the inaugural program, I extend my deepest gratitude to the Honorable Minister of Culture and Tourism and also our Chancellor, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, for gracing the inaugural function. I'm equally grateful to our guest of honor, Honorable Member of Parliament, Dr. Mahesh Sharma, for his esteemed presence and valuable insight. I express my gratitude to Professor Shushmita Pandey, Dr. D. Satyamurthy, and Dr. Sabyasachi Mukherjee for their special lectures. I'm grateful to the head of various institutions and officials of the Ministry of Culture for their esteemed presence. I also express my gratitude to Indian Council for Historical Research for their financial support in organizing this conference.
A special note of gratitude to all the delegates who have attended this conference. I extend my heartfelt appreciation to each one of you who have come from across the country to present the paper in 32nd session of Indian Art History Congress and gave us the opportunity to make this conference a success. I'm extremely grateful to all the faculty, officials, consultants, and staff of the Indian Institute of Heritage who have worked day and night to make this conference a success. I would like to name the members of IIH family because without them it's just impossible to organize this program. I'm grateful to Professor Manvi Seth, Pro Vice Chancellor and Head of also Registrar in charge of the Indian Institute of Heritage. I'm grateful to Professor Satish Pandey who is Dean Academic Affairs, and both Professor Manvi Seth and Satish sir are my teachers. And these teachers have shaped us, and we are just trying to take their legacy forward. So thank you, sir. Thank you, Manu ma'am. She's not here today, but I'm really grateful to her. My colleague Juhi Sadia, who was registrar in charge while we were preparing for the conference, and I'm grateful to her tremendous support. Shefali Gupta ji, who is finance officer of this institute, and she has tremendously supported in every aspect of this conference. Dr. Kalyani, our assistant registrar, has helped tremendously and organizing the cultural program and dealing with the media person. I'm grateful to her support. Shri Biju T, who has looked into every aspect of the program as a superintendent of the institute, and we don't see him prominently, but he is the backbone of the institute, so I'm really grateful to him. I'm thankful to Bipul Chandra ji, Bipul Chandra Burman ji, Pooja Sharma ji, our librarian. Special thanks to Dr. P.K. Sharma, Dr. Manavpreet Kaur, and Shri Om Prakash Khetrapal ji, who has supported us tremendously in preparation of this conference. From account section, Sachin Gandhi ji, Akash Rawat ji, and Ashish Kumar ji, thank you very much for your support. From IT cell and projection assistant, Mr. Manjeet Singh, Satish Kumar Yadav ji, and Om Prakash ji, I'm extremely grateful to you all. We received tremendous support from our administrative department, Ms. Bhavna, Pooja, Devender ji, Navneet Ranjan, Nitin Kumar ji, Rahul Raval ji, Santosh ji, and Devji ji. Many thanks to each one of you. Our housekeeping staff constantly work to keep this place neat and clean while preparing for the conference. And last but and very importantly, one person who was again looking after every aspect of this program with artistry department is Shri Harish Joshi ji, who is Hindi translator at the institute, and he has been contributing to every aspect of this program. So thank you, Harish. Thanks a lot. I'm grateful to research assistant, research scholars, and our students in artistry department who worked very hard for this event. I would like to take their name. I'm sorry, it's being late, but just a moment. And I'm grateful to Arunima Tiwari, Deepak Kumar, Gitanjali Yadav, Sayantini Ray, and Dr. Rita Kusum. Thank you, everyone. Research scholars Priyanka Saha, Gaurav Kumar, Shweta Dava, and Ujjwal has worked day and night during 3 days. And then we have our young volunteers from 4th and 2nd semester. Aditi Verma, Ananya Jang, Ananya Raj, Afradita, Chinmoy, Deshna, Irfan, Khushi, Mahima, Muskan, Neha Singh, Prachi, Princey, Sapna, Shubha, thank you so much from 4th semester. And 2nd semester, dear students, Akanksha, Ananya, Ankit, Anshul, Chandrima, Dikshita, Fiona, Garima, Isha, Madhavi, Mansi, Ajay, Nancy, Ruchika, Samprita, Sovan, Shreya, Swarisha, Supriya, and Yashasya. Thank you all. Thank you so much for making this fun. And I'm extremely grateful once again, the members of Puja Party Samman, who encouraged us greatly during this conference. Thank you, Sajeev sir, for starting this initiative. Thank you, sir, for this the other fellowships which you are providing to the student in the form of
form of the awards. And again, before we disperse for a tea break, I mean, it's too late. I'm grateful to Professor Sachidanand Joshi ji once again, sir. Thank you for coming here and taking out time. And thank you, Professor Sanjeev Gautam, for being here. Thank you so much. Thank you. National anthem, yeah. Can you to play the national anthem? national please? anthem?